عينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de nous tawfiq aujourd'hui pour faire namaz asr avec Jamaat. Nous faisons tilawat al-Qur'an, nous faisons de manqabat burda Shareef. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala par wasila huzur de Karim Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam que Allah subhanahu wa ta'ala fait une bonne ibadat qaboul. Pour qui maqsad, pour qui l'intention, pour qui niyat qui fait sa programme là, Allah subhanahu wa ta'ala fait sa niyat là aussi qaboul. Allah subhanahu wa ta'ala y envoie son rahmat, y envoie son barakat dans sa case là. Alhamdulillah, on peut guetter là-bas blanc, ici blanc, ici vert. Il y a trois couleurs. Trois couleurs, parfois, dans l'élimination, il y a trois couleurs, quatre couleurs. Tout va aller, mais seulement dans un seul courant. Un seul courant qui amène couleur blanc, couleur vert, couleur bleu. Un seul courant. Subhanallah. Subhanallah. Un seul courant. Si tu as un courant, aucun ne peut pas allumer. Il faut dire, allume ce courant-là, il est là pour allumer. Comme ça même, quand même les Qadri. Quand même les Ashrafi, quand même les Naqshbandi, quand même les Suharwardi, quand même les Attari, n'importe différents y étaient, mais seulement dans lesquels un seul courant est là, c'est Muhabbati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si pas la Muhabbat, non, il n'y a pas allumé. Dans lesquels c'est là, Muhabbati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, c'est aujourd'hui, fait Eid Meelad Nabi 15 ans. Eid Meelad Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand du temps Rasulullah son nom, nous a dit sallallahu alayhi wa sallam. Tant Muhammad son nom, nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le papier quand nous écrivons aussi, nous écrivons sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas mettre S.A.W. Il est haram pour écrire ça. Nous pas faire kanjous le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le daroud, nous pas faire kanjous. Ne pas faire qu'un juste le Daroud Shareef. Nous écrivons bien sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes un affiche mettez hier un programme, grand programme. Eid Meelad Nabi. Muhammad il met P-B-U, peace be upon you. P-B-U. Nous pas écrire, nous mettons peace be upon you. Comme ça nous écrivons, pas faire initial. Pas faire initial dans Daroud Shareef. Subhanallah. Et Muhabbat. Nous tous nous gardons Muhabbat, non? Nous gardons Muhabbat avec nos enfants, nous gardons Muhabbat avec nos papas. Un papa garde Muhabbat avec ses enfants, avec son madame, avec tout nous avons Muhabbat. Mais seulement, nous avons Muhabbat. Les enfants lisent, alhamdulillah, ça nos enfants ça peut lire. Mais seulement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit comme ça, personne n'a iman. Aussi longtemps qu'il n'est pas contre moi, c'est-à-dire contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils sont maman, son papa, son madame, son voisin, n'importe qui sont là, entier toute l'humanité, s'il est content, plus qu'il Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a iman. Tu es content? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il tout ça là, plus qu'ils sont madame, ses enfants, plus qu'ils ont tout. Est-ce qu'il nous est dans sa léquille là, nous? Nous sommes léquille pour dire non. Quand on arrive à la namaz là, les enfants là, non. Il y a un football là. Non, mon compte à ça, please.
Ça s'appelle Muhabbat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non. Nous disons, gâté, chéri, mon bébé, toi, viens, mon bébé, mon content beaucoup. Mais c'est moi, quand bébé dit comme ça, c'était quelque chose pour moi. Aïe, de pince, la peine en casse pasté. Ça s'appelle Muhabbat. Dieu nous fait un travail, mais nous pas fait aller. Est-ce qu'il s'appelle Muhabbat avec ça, du monde là? Non. Sinon, Muhabbat, vrai Muhabbat, veut dire quand nous disons quelque chose, nous acceptons ça quelque chose là. Subhanallah. Tiens, une fois, du monde. Nous connaissons mon travail infirmier. Tu connais mon travail infirmier, mon imam, plus mon travail infirmier. Wa alaykum assalam, rahmatullah. Je connais mon travail infirmier, c'était un imam, mon fini qui est infirmier, fini retire. Et moi, j'ai des Adarolum Phoenix, l'en prendre bien longtemps, 1980. Et moi, Astem, je fais imam même. Et nous fait établir Redine. Et madame vini, et Michel vini. C'est pas qui n'est arrivé sur l'IG rouge. L'IG rouge. Pour un 10 ans, pour saigner. Moi, je dis, moi, je dis, ça, besoin de moka. Besoin de moka, ça. Besoin de moka pour ça bien. Sinon, pas pour bien. Je dis, moi, sire, je dis, oui, sire. Mais lui, la case, il a Muhabbat. Muhabbat avec son madame. Beaucoup de Muhabbat, il y a. Je dis, n'est-ce pas la case? Je montre mon madame avant, cause Muhabbat. Madame là, il était, alhamdulillah. Madame là, il prend un glaçon. Un glaçon. Parce qu'il a dit, mais comme un garçon là, et chaque garçon là, les jeunes finissent blanc net. Je dis, dans le boca, non. Tu me goûtes, non. Qui n'arrive pas à Muhabbat, qui fait ça bien. Je dis, alhamdulillah. So, madame, il prend un glaçon, un ice cube, il met sur la bouche avant, il dit, assisez. Il passe, Muhabbat peut passer. C'est là, Muhabbat, on a Muhabbat. Et Muhabbat, quand il passe, les îles, il blanc. Ça s'appelle Muhabbat. Subhanallah. Comme ça, Muhabbat avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Vous avez ça, Muhabbat là. Yaqin le Muhabbat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Yaqin le parole de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Yaqin, ça même qui nous peine. Le parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an, quand Huzur Karim Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dit, Ali, al domi le molili, quatre côtés, et un ennemi pour attaquer moi. Le 60 tu finis sorti, trop long, on raconte un petit bout. Le yaqin. Huzur Karim Rasulullah finis sorti. Et Hazrat Ali, peut dormir sur l'île là. Il connaît qui bana pour attaquer. Mais c'est moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ali, al domi le molili aujourd'hui, et plus tard, il y a un amanat. Amanat, vous avez tout mal dit, alhamdulillah. Ça, nous pas faire attention. Nous prenons casse prêté avec quelqu'un, nous pas retourner. N'importe qui a fait, nous prenons un livre, un petit livre, nous prenons. Amanat, ça dit, là, si nous gardons, nous ne pas retourner, un grand gounah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban Quraysh, ban kafir de Quraysh, ban amanat. Pas amanat ban musulman, ban sahaba karam. Amanat ban Quraysh. Parce que ban sahaba karam, c'est fini aller. Tu retournes ça, après tu viens joindre moi Madina. Musulman Madina. Hazrat Ali radhiyallahu anhu, il dit, ça joue là, capable, moi capable faire, moi faire Mehfil, moi faire une nuit d'ibadat. Mais seulement, non. Il finit dormir, il s'est caché sommeil, il finit gagner là, alhamdulillah. Et Hazrat Ali radhiyallahu anhu, quand malade dit comme ça, tu n'as pas bharosa de zindagi, qui bharosa de zindagi? Il dit non, quand on fait un côté assalamu alaikum, on ne connaît pas le côté, on va réciter, mon ruh capable de sortir. Mais seulement, ça joue là, malaikul maut, pas pour venir joindre moi, parce qu'il Huzur Karim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient dire, joindre moi Madina Shareef. Ça c'est yaqin. Yaqin. Mais seulement yaqin le parole, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais si les fins de fait Darud Sharif, il pas fin de nous faire namaz, tel namaz nous pas faire nous gagner tel azab, tel guna nous faire nous pas gagner tel azab, lola nous pas gagner yaqin de parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment yaqin nous est là quand nous fait Darud Sharif, une fois Darud Sharif nous fait, nous gagnons 10 neki, 10 guna effacés, darja spirituel augmenté par 10 fois. Nous n'avons yaqin lola. Mais sommes en yaqin, le ban parole qui les fin dire qui nous pas fait namaz. Il y a un frère d'Alger Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faire namaz. Après namaz, nous avons 100 fois de route de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Fais une ibadat qui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inshallah ta'ala nous fait doa avec Allah subhanahu wa ta'ala nous dormir. Ya Allah, fais Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binda nous khwab. Amin. Binda nous khwab. Fais darud sharif. Après chaque namaz, facile ça. Après chaque namaz infini, nous prenons tasbih, nous djibout vers Madina, vers droite, Qibla. Parce que pour nous, Madina aussi ici, c'est Kaaba aussi ici, Madina aussi ici, côté nous. Nous faisons 100 fois darud sharif. Sallallahu alayhi wa sallam. 100 fois après Fajr, 100 fois après Zohar, 100 fois après Asr, 100 fois après Maghrib, 100 fois après Asha, 500 fois darud par jour, finit à envoyer Subhanallah. Subhanallah. Et nous faisons droit qui nous trouve figure Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, monsieur Liano, un dernier waqt nous raconter parce que Kari Sahab fini venu, très respecté. Non, monsieur Liano, jab dame wapasi ho ya Allah, non? Quand vous l'avez sorti, lappe ho, la ilaha illallah. दिल में हो सूरते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किफिया nous dire ça kifiya nous dire Abu Sa'id la ilaha illallah ko fini mais kifiya nous dire de dil bzena bzena surate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nous raconte après Coran Sharif après nous terminer surah Yusuf parce que quand tu es roux il dit comment dire un gouni fin mouillé bouteille fin crasée là, donc quand nous tire sa bouteille là, qui a été désirée, comme ça nous souffrir quand roux sorti, malakul maut vini. Mais surah Yusuf, qui fait nous dire ça? Surah Yusuf, quand nous lisons, subhanallah, plus jolie histoire du Coran Sharif, surah Yusuf, plus jolie du monde. Zulekha, tu es content? Hazrat Yusuf alayhi salam, qui est de prison. Ben, j'ai comme mon camarade, j'ai comme ça, comment il a le content, un prisonnier a le content, du monde qui travaille, un serviteur comme ça, il a content comme ça. Le Coran Sharif. Zulekha, j'ai comme ça, assisé. C'est long la table. J'ai tout assisé. D'un sac une pomme avec un couteau. Il dit, moi, pour faire Hazrat Yusuf alayhi salam, passer. Juste passer. Il n'est pas pour que les autres, juste passer. Je dis, qu'est-ce comment il passe, je commence à couper pomme. Mais là, il fin pomme, fin couteau. Hazrat Yusuf alayhi salam, fin passer. Quand il fin passer, sa beauté qui est de Hazrat Yusuf alayhi salam, ben là, fin commence, coupe les doigts, je ne peux pas sentir. Parce que sa beauté qui Hazrat Yusuf alayhi salam mena là et beauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est beauté tchena quand nous jab dame wapas ho ya Allah labbe ho la ilaha illallah dil mein ho surat Rasulullah quand tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so figure mubarak aucun dulia pas pour gagner quand roula pour sortir subhanallah donc il y a un vrai muhabbat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un yaqeen de parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il y a un vrai muhabbat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui c'est qui nous fait écouter sami'ana wa ata'ana. Nous pas écouter, nous mettre en pratique inshallah ta'ala wa ma alayna ila al-balagh. Jazakallah. Alhamdulillah. Un Mehfil Meelad Nabi sallallahu alayhi wa sallam est célébré dans Montida côté Razah. Surname क्या है? Khodaboccus. Razah Khodaboccus. Khodaboccus. Le contexte Maurice Khodaboccus. तो alhamdulillah Mehfil infini commencé un très joli message au fin tendé par Imam Jilani Banali. Allah tabaraka wa ta'ala donne l'occasion qui nous mette en pratique. Dernière parole qui lui fait dire c'est Sami'na wa ata'na, une extra jolie parole qui nous tendait tout le temps, mais quand nous tendait, mais ita'at aussi important. तो आइए मैं भी अपनी हाजिरी लगाता हूँ प्रभु तो तौदे मगरिब तक हमें इंशाअल्लाह महफिल को उरूज पर पहुँचाना है रज़ा ची
de tua request नात लिची फेया एवं मैं एंची में साज मौसीप आ गई, तो मैं सब मिलाकर एक गुलदस्ता आपके सामने पेश करता हूँ, आप उसको कबूल फरमाएं। पहले दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. قولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. سب بولے مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی. عید میلاد النبی
मसरूर है, ईद मीलादुन्नबी है, दिल बड़ा मसरूर है। ईद दीवानों की तो 12 रबीउन नूर है। मरहबा बोलो मरहबा, झूमो मरहबा मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। इस तरफ जो नूर है तो उस तरफ भी नूर है। ज़र्रा ज़र्रा सब आलम का नूर से मामूर है। मरहबा 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 मक्की मदनी मदनी, मरहबा मरहबा मक्की मदनी मदनी, मरहबा बोलो मरहबा, झूमो मरहबा मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। आका की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, मलजा की आमद मरहबा, रबी की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा 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 मक्की मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। मरहबा झूमो मरहबा मरहबा मक्की मदनी मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मरहबा 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 मक्की मदनी मदनी, मरहबा 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 मक्की मदनी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का. Quand on peut dire bachcha, les bons qui nous apprennent en même temps qui aulad, c'est Allah tabaraka wa ta'ala so un grand ni'mat. Qui tout le monde pena ça. Et il y a beaucoup de gens capables aussi ou connaît, nous habitués, connaît même des gens qui nous fait dua, faire ça, 15 ans mariage, 20 ans mariage, pena enfants. Et il n'y a pena aucun problème. Monsieur aussi correct, bien, madame aussi correct, bien, pena aucun problème médical, mais pena enfants. Décision Allah. Ça aussi est là. Mais si Allah tabaraka wa ta'ala fin donne ou aulad, c'est un grand ni'mat qui Allah tabaraka wa ta'ala fin donné. Là, quand on gagne aulad, nous avons une responsabilité.
Qui responsabilité? Ta Quran Majid, Allah tabaraka wa ta'ala finjanu thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Jour Qiyamah pour pose question concernant tout ban ni'mat qui Allah fin donne nous. Pour pose question. N'importe qui ni'mat, qui est petit, qui est grand. Quand Allah peut dire, il pose question, alors pour Aulad aussi pour pose question. Moi tu donnes toi Aulad. Comment tu grandis li? Comment tu élevé li? Qui t'en montre li? T'en donne li din, t'en donne li adab, t'en donne li Coran, t'en donne li l'amour Rasulullah, l'amour Ahlul Bayt, Ashab, c'est qui est obligatoire pour poser question ça. Nous pas besoin de penser dans cette direction-là, que nos enfants, ça, nous qui sont là, qui montrent nous. Un petit ici, un petit là-bas, nous-mêmes nous débrouiller, nous grandir, aujourd'hui nous connaissons, mais nos enfants aussi pour comme ça. Pas lui-même, ils pour apprendre. Non. Azoji quand nous était l'époque capable quand ou chipchi quand nous chipchi pas chi na sa quantité fitna qui est na azoji qui quantité fitna est na comme dit comme azot même zot abe chidja montan sa dialogue là dans Maurice même il est 100% vrai qu'il longtemps masjid chi lapai iman chi béton mais azoji masjid béton iman lapai. Qui sont raison? Iman qui fait une la paille? Qui fait déjà ça? Alhamdulillah, c'est qu'il y a un iman, nous ne pas cause 100% comme ça. Non, quand nous causons tout le temps comme ça, c'est généralement. Qui fait déjà iman la paille? Parce qu'il y a tellement beaucoup de fitna et le marché. Quand nous chipchi, est-ce qu'il nous connaît qui peut passer dans l'Inde, qui peut passer dans Pakistan, qui peut passer dans Sud-Afrique, qui peut passer, nous connaît Azoji, ces enfants-là, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils ont sur fingertips, dans sur portable, ils connaissent qui peut passer entre le monde. Il peut assiser dans la case, il peut get tout. Alors en même temps, une cause une passe ça là, moi le pli devant, et n'a dit mon pas comprend là, Inch'Allah, on sait pas que son moi peut venir là. Sayyidi Ghaus Pak rahmatullah alayhi so 11वीं शरीफ पे venir Rabiul Ghaus, Rabiul Akhir पे venir Rabiul Thani. Quand nous raconte sa parole Ghaus Pak rahmatullah ta'ala alayhi nazartu ila biladillahi jam'an ka khardalatin ila hukm ittisali. Qui Ghaus Pak radiyallahu anhu finjia qui moi me trouve entre le monde le comme ça comment un petit lagrin moutarde le me plat la main. Jusqu'à là il n'a pas comprendre ça. Je dis non ça shirk ça. Ça c'est juste Allah qui a ce pouvoir là. Mais tous les enfants 7 ans 8 ans ils ont ce pouvoir là malin. Azoji ils trouvent tout. Côté na côté pena Azoji science peut montrer nous. Alors vous pouvez dire non mais ça à travers portable, ça à travers network, ça à travers les réseaux sociaux, ça à cause ça qu'il est comme ça. Donc bhai ça l'autre là réseaux sociaux, ça là réseau spirituel ça. C'est que beaucoup plus fort que sociaux, beaucoup plus fort que réseau internet. Qui fait pas bien comprendre. Donc aujourd'hui nous bons enfants, il y a beaucoup de fitna. Alors il est bien important pour nous, les jeunes parents, c'est qui fait que 20 parents 25 ans, 30 ans, ou fait que marier, ou une fille gagne des enfants, petite fille, garçon, il est bien important qu'ils même en prennent de akida avant, même en prennent de din avant bien, et là, fini montrer aux enfants depuis petits. Fini commence à montrer. Voilà, devant moi, il y a une jolie riwayat. Hazrat Sayyiduna Jundub bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu lijiya. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque Mubarak, quand nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam, lichi zahiri hayat quand nous Aqa chilla, dans sur l'époque Mubarak, lili pejia, Hadrat Jundub pejia, nunu chi chipchi. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il y montre nous Coran, nous Aqa chi pe montre nous iman. Avant qu'il y montre nous Coran, nous Aqa chi pe montre nous iman. Après Hazrat Jundub peja quand nous chi pe fini en prendre iman, là nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam chi pe montre nous Coran, là par barakat sa Coran là nous iman chi pe vin plus fort. Ça deux affaires marchent ensemble. Montrez-lui aqida, montrez-lui iman avant, là montrez-lui Coran aussi. Et quand on peut montrer le Coran, pas juste guetter lire. Guetter lire, il bien connaît même, tout nous bien connaît.
Au contraire, souvent moi habitué dire sa parole là, aujourd'hui moi pourrais dire que aujourd'hui si ou a 60 ans, ou a 70 ans, ou a 75 ans et ou pas encore connaît comment pour guetter lire le Coran. Moi pas cause pas que hafiz non. Guetter lire si ou pas connaît. Qui ou peut penser jour Qiyamah si Allah Azza wa Jal fin pose nous sa question moi tu donne toi en la vie 75 bananes ton reste de la terre 30 séparats guetter lire तो pan kon लिया क्या जवाब देंगे bloqué travail madame enfants ये जवाब देंगे नहीं ये नहीं चलेगा alors सीखें on prend n'importe qui l'âge où était au moins guetter lire Coran en musulman de responsabilité là ça les besoin connaît ça alors nous besoin qu'on Coran guetter lire oui mais en même temps nous apprendre Coran nous comprendre Coran nous montrer nos enfants Coran depuis petit et pour ça faut nous en le temps faut nous-mêmes nous connaît nous-mêmes nous connaît là qui nous peut pas faire ça ça c'est quelque chose après il y a trois droits qui un parent les besoin donne aux enfants. Il y en a plusieurs, mais seulement dans sa riwayat là, il mentionne 3. Écoutez, dans hadith Pak, il mentionne le papa, parce que papa est spécifiquement là. Maman, les premiers à l'école pour les enfants. Nous tous nous connaissons. Maman aussi, les bien important que maman les compte sur dîne. Maman li compte sa religion, li compte sa bande affaires là, qui les a pour montrer parce qu'une journée, les enfants là, dans maman se godi, il pas dans papa se godi li. Papa peut retourner à soi tantôt, là il peut gagner un petit le temps avec les enfants, mais still, pas veut dire que papa li sorti depuis dans sa responsabilité là, non. La hadith peut adresse directement papa, walid, peut dire walid, pas veut dire walida là non, peut dire walid, papa. Qui hadith peut dire le walid il a 3 droits pour ses enfants subhanallah numéro 1 an yuhassina ismahu premier qu'il lui donne lui un joli nom il pas donne lui un unique nom hadith pas dit il donne lui un nom unique qui pas existé dans l'endroit aujourd'hui nous problème c'est ça quand les enfants prennent naissance premières affaires viennent dans la tête Ibrahim ben il y a 4 Ibrahim dans l'endroit Yusuf, ton dada tu appelles Yusuf. Abdullah, Sanala appelle Abdullah. Abdurrahman, un tel appelle Abdurrahman. Tout ban joli nom. C'est qui, et un nabi son nisbat, sahaba son nom, nous trouvons antiquité. Nous trouvons ancien. Nous trouvons démodé. Ton nom. Joli nom qu'on peut dire, c'est-à-dire les bizans et un nisbat awliya Allah, sahaba ikram, anbiya uzam, bizan et sa nisbat là. Pas al-rod unique, al-rod un joli nom. Alors premier droit, an yuhassina ismahu, qu'il lui donne lui un bon nom, अच्छा नाम रखे. Deuxième droit, wa yu'allimahu al-kitaba, lui donne lui l'éducation Coran. Allahu Akbar. Donne-lui l'éducation Coran. Là aussi, nous pouvons attirer l'attention une petite. Nous, quand nous mettons les enfants dans le maktab, dans le masjid, dans le maktab, nous envoyons, nous pensons, nous faisons nos responsabilités, nous mettons dans le maktab, moi. C'est un oustad qui a besoin de faire ça, pas moi. C'est oustad sa responsabilité. Lui qui a besoin de montrer aux enfants, si lui pas là, lui pas là, il y a plusieurs fois quand moi aller, il pas peut donner ça, il pas peut faire ce travail comme a besoin. Lui qui peut le répondre. Non, ou aussi vous pouvez le répondre. Parce qu'on met on fait un premier pas, alhamdulillah. Mais seulement où tu as besoin de suivre, où tu as besoin de follow-up. Qui nos enfants peuvent en prendre? Et qui sont là qui est capable de faire follow-up? C'est lui qui connaît lui-même. C'est lui qui pas connaît le Coran lui-même. Comment il peut faire follow-up? Donc, causer peut venir tout virer, tourner en rond, peut venir l'éducation digne. Il faut des parents et l'éducation digne qui est capable de grandir ses enfants comme un shariat ou lait. Comme un sharia tous les. Alors deuxième droit, wa yu'allimahu al-kitaba, lui montrer le Coran. Et troisième, et dans ce hadith là qui finit dernier troisième, qui wa yuzawwijahu idha adraka, c'est-à-dire quand il vient grand, quand il arrive dans sa l'âge, qu'il est baligh, il est capable de faire nikah, alors besoin de faire son nikah. Ça va une responsabilité le papa.
Alors nous guetter astea si Allah Azza wa Jal fin donnu aulad eski nous peut faire ça première affaire non alors nous fini donne non deuxième affaire Coran sikhao astea Allah da ina beaucoup ban branche beaucoup ban quelque chose qui attaché avec ça quand on peut dire montrer Coran pas veut dire zis Coran dans plusieurs riwayat encore quand nous tient sur summary c'est-à-dire montrer li din en entier et quand nous peut dire din Imam Ghazali rahmatullah alayhi galiban Imam Ghazali rahmatullah alayhi parole si Islam li tienen l'autre non il pas pour appeler l'Islam nos religions Islam si li pas pour appeler l'Islam si li pour l'autre non vous connaissez comment li pour appeler adab Allahu Akbar फरमाते हैं अगर तुम्हारे दीन का नाम इस्लाम नहीं होता तो अदब होता parce que इस्लाम c'est adab c'est respect montrer aux enfants respect अल्लाह तबारक व तआला हमें बच्चों को अदब सिखाने की भी तौफीक अता फरमाए 12 अभी तो टाइम है तो ça c'est des trois affaires qui nous sont importantes qui nous besoin montrer comme on peut dire din montrer les din aqida entendez la première affaire c'est qui dans l'autre hadith premier hadith qui nous mettait c'est aqida iman qui veut dire aqida les enfants les besoin connaissent qui aqida les besoin ina concernant Allah qui aqida les besoin concernant awliya Allah rasulullah les besoin connaissent aqida important iman important après montrer le Coran aussi et généralement din d'après ou capacité d'après où parce qu'il pas veut dire qui ou assis dans la case ou faire aux enfants une mufti il pas capable dans la case il pas capable une mufti pas capable une alim ça ina soban place ina soban madrasa ina soban classes mais au moins base nous faire ça c'est nous responsabilité ça astea qui besoin montrer nos bons enfants quand nous peut dire din iman si ou réussit montrer aux enfants ça quelque chose c'est qui peut me mettre devant vous et moi pour terminer la même mon pensée c'est qui Allah doit le protéger mon pensée aux enfants pas pour rentrer dans la drogue inchallah aux enfants ils pas pour rentrer dans mauvais vice aucun mauvais vice ils pas pour rentrer dans aucun mauvais chemin vous connaissez qui a fait ça c'est fikre akhirat qui soch fais-les calculer depuis petit fais-les calculer pour akhirat बेटा तुम फैसा ओके तुम फिनी फैसा बिल्ला तो पानल कोज मौची बेटा की तो pour répondre devant Allah da baginaz même da chipchilem pas nécessaire qu'il besoin crier ou besoin faire une lecture 30 minutes avec lui ça n'est pas travail aussi ça au contraire les besoin d'une bonne façon da causer la même quand les enfants fini commencent comprendre et comme on peut dire fini commence comprendre ils commencent à partir de 5 ans 6 ans ça à partir de ça, là, 5 ans, 6 ans, ou fini commence cause akhirat avec lui. Fini commence cause une fois qabr tout avec lui. Fini commence cause l'amour tout avec lui. Hum sochते ना कि l'amour का रिसाब वो पे cause là. Là, il y a encore jeunes, encore enfants, on peut dire cause l'amour oli, cause qabr oli. जी, il est important. Qui te ha nous croyance हमारा यकीदा तो नहीं सिमु को cause qabr oli से रजा लिबु fini mo avant les. Non, jamais non. Les pour vivre, Inch'Allah, sur la vie, c'est qu'Allah fait écrire. Mais comme on peut cause l'amour avec lui, comme on peut cause qabar avec lui, comme on peut cause akhirat avec lui, ça lui peut donner une direction, façon penser. Dis, ça qui est important. Il peut donner une direction, comment il besoin calculer, comment il besoin penser. Azodi, yही तो मसला है. Azodi, ça même problème, une bonne quantité musulmane, je ne pas pense akhirat. Au contraire, vous connaissez comment je dis? Quand je donne un clip, अभी मैंने देखा था एक क्लिप सर शेयर के लिए छिपे फिर शेयर के लिए लो सोशल मीडिया तो बाज़ औक़ात कमेंट पढ़ने का मौका मिलता है मेरा ही क्लिप था मुझे पे कोज लो इंजाफिया आखरत अगर मुसलमान आईडीज़ के कमेंट्स पता है क्या है की ली भेजिया एंडला की भेजिया ई द दुनिया पे फ्यानू पे है तो साला कौन बहुत द खबर नु पोल के द खबर नु लाख दुनिया कोज दुनिया अल्लाह फिनो वाइनू लो दुनिया लानु बिजा के दुनिया कौन बहुत द खबर लेला नु आल के खबर quand nous rentrons d'akhirat là nous allons d'akhirat तो moi pan étonné quand on peut get ça parce que moi qui mon fini connaît qui c'est-à-dire ça pauvre job musulman là c'est qui peut faire ça qualité comment là li pan gagner jamais ça mindset akhirat là ni so papa ni so maman ni so ustad li pan gagner une fréquentation li pan gagner même une conversation akhirat dans la case jamais alors on va pas vous dire qu'il est pas honte
mais dans quelque part si nous guette bien que li pan gagner sa tarbiyat là alors so parents to mais ici li onto dans ce sens là qu'ici il y a une grande immun li assène l'esprit asté li mange du pain li mange du riz li pas mange l'herbe li bien comprend et quitte sa akhirat. Alors ça nous asté là depuis petit si avec nos enfants quand ils peut élever ils peut grandir nous cause akhirat nous cause question réponse तू quelque chose अल्लाह को demande ça बेटा अब जिस तरह मैं अपनी मिसाल दूं घर में भी हम लोग जब बात कर रहे होते हैं पे फे वुजू अरे gros c'est robinet to pe ouvert beta to pe faire wuzu to connais combien de l'eau ton fini gaspiller jou qiyamat pour pose question là avec ça ni'mat là de l'eau une ni'mat ça comment tu pour répondre ça quand tu te de l'eau ton pourtant il peut faire wuzu il peut faire un bon travail lui mais seulement आखिरत की सोच देने की बात हो रही है mo pe cause comment nous besoin donne penser आखिरत कि li puena en traka da chaque travail even taï la limia taï mon chलाते हैं ये भी हमें घर में बोलना चाहिए बेटा तुन लेवे तुन कित्तो लासाम ये कौन हाली में तुन कित्तो लासाम पहुंच लाते अला उनको पे हाली में तो पन ताई लाली में तो पन ताई सा बे तुन कित्सा बे तों की तो पादा लासाम लिपेरेस गुले लिपापिल गास्वियाजा द कुरान अल्लाह अज़्ज़ा वजल फिंजिया इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन अल्लाह पाक होता सेल्वी की फिया गास्वियाज तो पे फिया गास्वियाज इलेक्ट्रिक अब ये एंडे l'exemple पे दोनों depuis petit, c'est-à-dire au lieu qui ou crieli mo pan fingi à toi quand tu quittes la sam tu besoin fermer tu besoin tailler tu besoin faire ça ये बोलने के बजाय उसको कुरान सिखाओ ना उसको कुरान से बताओ कि ये गास्पियाज कर रहे हो तुम यू क़यामत besoin répondre pour ça तो इससे क्या होगा quand li pe gagner ça gamatin tantôt li pe gagner ça penser कि mo pe gaspiller attention ouais na pour répondre अब ça qualité des enfants quand li pe grandir अब बताओ देखो como पे रेजिया कि एना fois शैतान li avec tout एना जिमुन religieux aussi rentre dans pied शैतान कि अल्लाह तबारक व तआला protège nous शैतान ये कोई नहीं कह सकता कि नो मो religieux मो एना लाबाब मो मुआताश इमामा मो faire 5 नमाज मो शैतान proof no personne pas शैतान proof शैतान ने न्यापोट किसाना लिकाफ खावाई ली अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए इसीलिए अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए शैतान से बचा कोई नहीं mais seulement इंशाअल्लाह si de sa façon là où peut élever aux enfants de sa façon là où peut grandir toujours liena un khawf khuda toujours liena un fikr akhrat dans la tête कि इंशाअल्लाह li pas pour al faire ban bêtise ouvertement et sans tracas si li pour faire aussi li pour un खटखट dans लेके li pour un डर यार मैं क्या कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ non li pas bon et इंशाअल्लाह ça डर là pour amener vers tauba plus vite इंशाअल्लाह et quand il finit faire tauba Allah azza wa jalla lui pardonne at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba la c'est lui qui finit faire tauba lui vient pareil comme jamais lui pas finit faire tauba jamais lui pas finit faire péché तो ये इस अंदाज में अगर हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका फल हम दुनिया में भी देखेंगे और फिर यही औलाद हमारे लिए आखिरत का वसीला बनेगी e daí cose como mo podia que azoji mo petrouver Razah fino vaima e pe banno isale sawab alhamdulillah lili pe fiasa ban isale sawab pour la famille marhumin तो देखें azoji kutnu pe vive en l'époque bien selfish chacun get pour lui mo rappel ludzula muchi motion sada en bayan mo pa ko ki kote muchi जैसा का मुची फेकविन मोरिस जिलानी भाई तो हम बहुत शुरू से जानते हैं इनको का मुची फेकविन मोरिस mo rappel जिलानी भाई पूजिया वही mo pe mo une raison quand il y a un maillot dans l'endroit, je me rappelle bien, l'année 2002, 2003, 2004, 2005, 2000, jusqu'à 2007, 8, 9, 10 tout, je peux dire, comme ça. Après, quand Internet il commence à venir avec ça, quelque chose, mais avant, comme ça, quand il y a un maillot dans l'endroit, 40 jours, du monde peut venir, puis il y a la case là. Et il n'y a pas de place. Puis il y a Coran, puis il y a Dana, puis il y a Tahlil, puis il y a Tasbih, puis il y a tout ça là. Et pas peut inviter, pas peut faire élan, pas peut faire l'affiche, non, rien là. La bouche oreille, comment nous dire, bouche oreille, message là passé, telle famille, maïet, non, allez, Tahlil, 1 minute, 4 minutes, 10 minutes, salon plein. अब आप लाफिस भी निकालो पकड़ के नवाले नुलिया इन चाहिए फिर भी टाइम नहीं है लोगों के पास अब l'époque peut changer et l'hypoplie changer li il pas pour une pli bon aller oui nous besoin faire nos efforts qu'il pas mais seulement li pour aller l'hypoplie c'est-à-dire quand nous pouvons quand nous peut aller azoji si 5 jimun पे venir faire tahlil pas connaît quand nous पे mo 5 aussi pour venir ou bien non तो हम किसी के ऊपर डिपेंड करने के बजाय अपने बच्चों को
ऐसा सिखा के जाएं कि फिर इंशाअल्लाह किसी और की ज़रूरत ना पड़े। मुक्कोने मो पे कित मो ज़ौफ़ा सा ज़ौफ़ा लाएम आसे इंशाअल्लाह घामाते हैं तो स्तूबन बो अक्षों से गिली पे फेया मो पे गए सवाब दमो कबर इमुन मोतगली कुमा फे फातिहा मुन मोतगली कुमा फे ईसाले सवाब मुन मोतगली, ये हम करके जाए ना तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमें मरने के बाद भी सुकून नसीब होगा। तो अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे रज़ा खुदाबकस के इस प्रोग्राम को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम, ऐ शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला सलातो व सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा, रब ने फरमाया के बख्शा सलातो व सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना सलातो व सलाम। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े। झूम कर कहता था काबा, झूम कर कहता था काबा अस्सलातो अस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद इंशाअल्लाह। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो अस्सलाम। शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातो वस्सलाम। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अरहमर राहिमीन, हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा। तिलावत कलाम मजीद, नाथखानी, बयान, सलात सलाम कबूल फरमा। गलती को ताही अपनी रहमत से माफ़ फरमा। खाने पीने का जो इंतज़ाम होगा उसे भी कबूल फरमा। इसका सवाब हमारे अमल नहीं अपने फضल के मुताबिक अता फरमा। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीयतन तोहफतन नज़रानतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला बसिलसिला तमामी अंबिया किराम, सहाबा किराम, अज़वाज मुत्तहरात, शुहदाए किराम, ताबिईन, तबअ ताबिईन, औलिया उज़्ज़ाम को पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन वल मोमिनात, तमाम मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इंसान जिन्नात रिजाल गैब सबको पेश करते हैं, कबूल फरमा। अपने पीर और मुर्शिद, अपने वालिदैन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह खासुल खास का सवाब मरहूम सैफुद्दीन खुदाबकस को पेश करते हैं, तैयब खुदाबकस को पेश करते हैं, बाईम खुदाबकस, मुमताज जोगी, रफीक जोगी, हबीब गोजी को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अब्दुल मुत्तलिब अली बकस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। अमीर गुलाम हुसैन, नज़ीर अली बकस और हुसैन अली बकस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। ए मौला इसका सवाब मरहूमा जुबैदा खुदाबकस, हाफिजा खुदाबकस, अनेजा खुदाबकस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला मरियम बी जोगी, खरमून जोगी को पेश करते हैं, कबूल फरमा। खमरून जोगी को पेश करते हैं, कबूल फरमा। फिरदौस जोगी, हबीबा गुजी को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मोमिन अली बकस, खतीजा अली बकस, फजीला गुलाम हुसैन को पेश करते हैं, कबूल फरमा। शमीना खुदाबकस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। उम्मे ज़ीनत खुदाबकस को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला इन सब की खबरों को जन्नत का बाग बना। प्यारे आका की शफाअत अता फरमा। जन्नत में प्यारे महबूब का पड़ोस अता फरमा। ऐ मौला हमारे रज़ा के रोज़ी में, रिज़्क़ में, कारोबार में बरकतें, वुसअतें अता फरमा। इस घर पर अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमा। इनकी बीमारियां, परेशानियां, दुख तकालीफ दूर फरमा। इन्हें, इनके आल औलाद को बरकतें अता फरमा। ऐ मालिक मौला यही दुआएं हम तमाम हाज़िरीन मजलिस और देखने वालों के हक में भी कबूल फरमा। ऐ मौला हमारी औलादों को नेक बना, हमारी आने वाली नस्लों को भी नेक बना, आशिक़ रसूल बना, आशिक़ कुरान बना, आमिले कुरान बना, आलिमे कुरान बना। आमीन आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। मौला जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो न मांग सके वो भी अता फरमा। मौला जो हमारे दिल में है वो तेरे इल्म में है, कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।